We welcome you all for our first session of Community Engagement Program for the year 2021. Quick Take Impactful E-Learning. This session would be related to our e-learning classes on how our children, our students can make use of it to the best. I would like to introduce Ms. Monica Joshi, my colleague who would be the Hindi translator for the day. Ground rules. The first 250 attendees are permitted as per the capacity of the platform in MS Teams. I kindly request all the attendees to mute the microphone for the conducive session. The chairman would deliver his address, followed by the presenter with his presentation. We invite parents to fill out the feedback form with their queries, suggestions, and concerns, if any, you might have during the e-learning session. The forms could be obtained by scanning the QR code or by typing the given link at the end of the session. All queries would be answered by a corporate media response team to you at the earliest. धन्यवाद। इंडियन सेंट्रल स्कूल आप सभी का ई लर्निंग के 2020-21 के कार्यक्रम में स्वागत करता है। इस कार्य प्रणाली के कुछ हमारे निर्देश हैं, कृपया उनका पालन कीजिए। इस मंच की क्षमता 250 प्रतिभागियों के लिए है और निर्धारित समय 10 बजे से 5 मिनट पहले तक आप इसमें प्रवेश पा सकते हैं। कृपया कार्यक्रम के चलते समय अपने माइक्रोफोन बंद रखिए। हमारे स्कूल के अध्यक्ष इस कार्यक्रम पर कुछ रोशनी डालेंगे। इस कार्यक्रम के अंत में आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा जो हमारी स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। उसका QR कोड स्कैन कर आप अपने मन में आए कुछ भी विचार या उसमें जो कुछ पूछा गया है उसमें कृपया वो सब कुछ फिल कर हमें भेजिए। I would like to speak a few words about our chairman, a leader with a distinct vision who has led all his projects and investments to the heights of success. A businessman by profession, but a passionate educationalist too, who owns 5 schools in Kuwait, including our Indian Central School. He believes in giving back to the society of what has been achieved and strongly says that the best platform to give back are the students, as they are the pillars of tomorrow's society. In one of his quotes, he has said that there is nothing impossible if we believe that we can make it possible. A great leader with a strong vision, and the Indian Central School team is confident that we can move to the next level with his support, our dear chairman, Mr. K.O. Matthew. I cordially invite our chairman for the address. Good morning, parents. Let me wish you health and safety at these unprecedented times. We know it's very difficult for many of you. Some of you have lost their jobs. Some of you have difficulty getting out of Jalip. We are with you at this time in however ways that we can be of service to you. Having said that, pay attention to official sources of information rather than rumors or hearsay or anything like that. Listen to the official news channels and you will be having the best possible information. So let me wish you health and safety before I proceed further. We as Indian Central School and our greater group of schools, we believe in service to the community beyond curriculum delivery. So the school platform, our teachers, our staff, academics, all of us are able to provide for you
and support you, listen to you, hear you, partake in your own journey through our school platform. Now, when the crisis struck, we had the choice to do nothing, but we thought that we will be of service to you by providing e-learning, by engaging with your children, by engaging with our teachers, and engaging with you parents, so that we all have some hope to look forward to and sail through this until this is over. Now, we have various topics for our webinars in our community engagement program. We've selected topics and speakers, topics that are useful and relevant for you, our community. These topics range from e-learning, which is the subject of today's presentation. Career guidance is the second one. Number 3, we have physical and mental fitness. Number 4, we have fitness at home. Number 5, learning new skills during the lockdown. And number 6, strengthening relationships with friends and family while social distancing. So these are the various topics that we will be having webinars on. We have also organized for Hindi translation so that you, our parents, can understand better. And our hope is that when you understand, you will be able to support our students all the more. E-learning, it will help to engage students and use students' time wisely. Time is our biggest asset, and it is important that we use it wisely instead of wasting it. Every opportunity to use time wisely, we should cherish, because that is our greatest asset. So even if you're sitting at home, there are things that you can be doing to enrich your own lives and lives of those around you. As a school, we believe and we think that 4 or 5 months away from learning, from friends, from teachers, the school and the community is too long. We should take this time to connect and continue on our learning and engagement path. I'm ably supported by several administrators, board members, management team, and operational team. I'm so pleased, and we are all blessed in Indian Central School to be supported by these capable people. Let me introduce our key team members. Of course, we have our principal, Ms. Shanta Maria James. You all know her very well. She's been our principal for several years now. We have Vice Principal Noel, who is the main presenter for this e-learning presentation. Let me also introduce to you Ahmed Falah, Mr. Ahmed Falah, our Vice Chairman, was very supportive to our organization, to Indian Central School and our community. We're also supported by our corporate office administration and coordinators, Mr. Sundaram and Subin. Subin has been with me in our various schools for over 10 years. Sundaram has been working in our group for over 20 years. So we are ably supported by their patience, kindness, and ability to listen to you all and find solutions wherever we need to step in or reach you where you are at. We have a very capable IT team. I think we're seeing the benefits of the e-learning as well as how we've been able to set up and transform our school in very short notice during this time. So we are far ahead of other schools, and we're very pleased that we can be of service to you, the parents, as well as children. Now, putting together this effort for the community engagement webinars is my daughter, Stephanie. She will be supporting gently behind the scenes or on occasion in front. So this entire team is every day working to actively engage and support our school community, students, teachers, etc. Finally, beyond the CBSE curriculum and the e-learning resources we have and our teachers, as well as the digital
content that we have also collected courses from various well-renowned universities, and we think that will be of great help to students. Of course, you have to encourage your children to select, choose, learn beyond the classroom. My expectation and my hope is that each student becomes a responsible learner, taking care of his and her own journey in life. We have collected courses from Harvard University, Indian Institute of Management, and Tata Consultancy Services. So children can find a range of topics of their interest and take responsibility for their learning and development. So let me encourage you as parents to encourage your children to spend time to learn and develop their talents and skills. Thank you so much. माननीय अध्यक्ष केओ मैथ्यू सर के शब्दों में, इस अप्रत्याशित समय पर मैं आप सबकी अच्छी सेहत व सुरक्षा की कामना करता हूं व आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पाठ्यक्रम प्रदान करने के अतिरिक्त हम सभी आपके इस कठिन समय में किसी भी सहयोग के लिए उपस्थित हैं। हमारे इस वेबिनार में ऐसे विषय भी शामिल किए गए हैं जो आप सभी लोगों के लिए उचित व लाभकारी हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। पहली, ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन शिक्षा। दूसरी, व्यवसाय व पेशे संबंधी नीति चुनाव कार्यक्रम। तीसरी, शारीरिक व मानसिक स्वस्थता। चौथी, घर पर स्वस्थ कैसे रहें। पांचवी, लॉकडाउन के समय में नई चीजें सीखकर समय का सदुपयोग कैसे करें। छठी, मित्रों व संबंधियों के साथ सामाजिक दूरी रखते हुए कैसे अपने रिश्ते मजबूत बनाएं। 4-5 महीनों का यह लंबा समय जब हम व हमारे बच्चे पढ़ाई, मित्रों, अध्यापकों व स्कूल व समाज से दूर हैं, तो इस समय ई लर्निंग द्वारा एक दूसरे से जुड़कर सीखने की प्रक्रिया में कार्यरत जारी रख सकते हैं। यह बच्चों को समय समझदारी से प्रयोग करने में मदद करेगी। आप सभी का परिचय मैं अपनी टीम से करवाता हूं। प्रधानाचार्य डॉक्टर शांता, उप प्रधानाचार्य मिस्टर नोएल, हमारे उपाध्यक्ष हैं मिस्टर अहमद फला और संगठित प्रशासन अधिकारी मिस्टर सुंदरम व रणनीति संचालन प्रशासन अधिकारी हैं मिस्टर सुभिन, और आईटी टीम व मेरी बेटी स्टेफनी, जो इस सारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से विद्यार्थियों, अध्यापकों व आप लोगों तक पहुंचाने व आप सभी की मदद के लिए सक्रिय रूप से लगातार काम करती रहती है। इसके अतिरिक्त बच्चों के भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, टाटा कंसल्टेंसी की सुविधाएं भी ली हैं, जिसमें बच्चों को अपनी पसंद के विषय चुनने के लिए ढेरों विकल्प हैं। अपनी पसंद का विषय चुनकर उसे अच्छी तरह से जानने, समझने व सीखने का लाभ उठा सकते हैं। अपने बच्चे को इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी योग्यता व कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि वो अपना मकसद हासिल कर सुंदर भविष्य की ओर बढ़े। यही हमारी कामना है और शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। We take impactful e-learning. E-learning is a means of education that incorporates various skill developments, self-motivation, communication, efficiency, and technology. When a child involves in e-learning, he or she incorporates and accumulates various life skills. Indeed, it's an involuntary platform for growth. The platform is so interesting that it lures the child into a state of great interest, and thus the individual gets stimulated to self-motivation. Definitely, the communication skills in the physical world is quite different when compared to the virtual platform of expressions in the e-learning world. The child, in fact, is exposed to a sense of professional expression when he interacts in this platform of e-learning.
The individual starts performing more as the exposure increases, resulting in the high level of efficiency in an individual. Our children in this contemporary world are infused with technology, and this platform, e-learning, provides familiarization for the future. ई लर्निंग यानी ऑनलाइन पढ़ाई के बहुत फायदे हैं, जिससे विद्यार्थी को कुछ इस तरह के लाभ मिलते हैं। ई लर्निंग ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो बच्चों में छिपे हुए हुनर का विकास करती है। यह बच्चों को दिलचस्प तरीके से स्वयं को प्रोत्साहित करने में मदद करती है, संचार की कला को सुदृढ़ करती है और अधिक योग्यता लाने में यह एक सुंदर अभिव्यक्ति है। एक अनुभवी व्यवसायी मनुष्य की तरह सोचने समझने की कला को विकसित करती है, तकनीकी संबंधी जानकारी का ज्ञान करवाती है व अपने आप को ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करने की योग्यता में सक्षम भी बनाती है। आज का युग विज्ञान व तकनीकी का युग है, जिसमें हमारे बच्चे जी रहे हैं और ई लर्निंग का यह मंच उनके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत लाभकारी है। जब एक विद्यार्थी ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा लेता है, तो यह उसकी ना इच्छा से होने वाले काम को इच्छा से होने वाले काम में परिवर्तित कर उसका विकास करती है। The e-learning process. There are 4 focus areas for successful implementation of e-learning. In order to provide effective e-learning, our focus on implementation was on the 4 main areas from the institution's point of view. Learner was our target crowd, and all the other 3 factors constituted to provide a conducive environment for our students, the learner. The whole system was created with a focus to facilitate and provide a good environment. Learning material. The learning material was created for e-learning classroom environment and was planned with high priority for a different method in academic transfer when compared to the physical classroom environment. It is here that the teachers uses not only their oral explanation, but also incorporated notes shared on the screen, videos from YouTube, PowerPoint to support the explanation, and above all, Destination Success, an educational platform that provides videos, question papers, assignments, and worksheets for children as per the CBSE curriculum recommends. The management to provide quality invested in Destination Success for this e-learning program and provided link and password for every child to use at home whenever they want, and it goes free for the children without any extra fees. To create an interesting learning atmosphere, we reduced the time schedule and focused in selecting the core subjects for the classes. In technology, our IT department shortlisted and selected the best, resulting to the management investing to obtaining the license for the safest and user-friendly platform MS Teams for the e-learning process. हमारे विद्यालय ने ई लर्निंग के 4 मुख्य बिंदुओं पर काम किया है। विद्यार्थी, यह पूरी कार्यक्रम प्रणाली बच्चों को बेहतरीन व आसान तरीके से पढ़ाई का संपूर्ण माहौल देने को ध्यान में रखकर बनाई गई है। शिक्षण सामग्री, यह आपको पूर्ण शिक्षण अधिगामी सामग्री, अध्यापकों द्वारा की गई व्याख्या,
शेयर स्क्रीन, पीपीटी, समर्पित कार्य, वर्कशीट, स्कूल वीडियो द्वारा कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा को और भी बेहतर बनाने का प्रयास है। स्कूल प्रशासन बच्चों को बिना किसी फीस के डेस्टिनेशन सक्सेस का लिंक व पासवर्ड देकर मुफ्त शिक्षा देता है। शिक्षा को रोचक व बेहतरीन बनाने के लिए कम समय व मुख्य विषयों पर हमने ध्यान दिया है। तकनीकी क्षेत्र में हमारे आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा स्कूल प्रशासकों ने MS टीम्स का लाइसेंस लिया है ताकि बच्चों को सीखने का बेहतरीन व बड़ा मंच मिल सके। I would like to share the challenges that the learners may experience and how we can assist our children to overcome it and become successful. A child faces a lot of stress in a new environment, and especially when his comfort zone is changed from the class and his friends' environment. Parents need to melt down the adaptability struggle by providing the child comfort, security, and motivation. Definitely, technology might lead to technical issues like network connectivity, systems compatibility, and so on. But to save the child from all these disturbances, all our classes are recorded and stored, where the student can watch it during his comfortable time, and even more, repeat viewing the videos again and again for better clarity. Basic computer literacy is enough to use this platform. It's like watching a video from the mobile phone. In case you face any difficulty, feel free to inform the class teacher and we will reach out to you. Time management. Do support your child, dear parents, in helping him or her to manage the time for academics successfully. When the child is given an opportunity to clear his doubts to his basic level, he overcomes his ignorance and thus becomes happy, leading to self-motivation. And it is possible in e-learning due to the extensive knowledge data bank. जब एक विद्यार्थी पारंपरिक शिक्षा ना लेकर ई लर्निंग शिक्षा में प्रवेश लेता है तो उसको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माता पिता बच्चों को इस अनुकूल क्षमता संघर्ष भरे वातावरण में लाने के लिए प्यार से प्रेरित करें। कई बार तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका भी हल हमने किया है। ना देखे गए विषय की वीडियो रिकॉर्डिंग आप अपनी सुविधा अनुसार देखकर समझ सकते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का यह मंच प्रयोग में लाएं। यह एक मोबाइल पर वीडियो देखने जैसा है। कोई भी समस्या आने पर कक्षा अध्यापिका को सूचित करें। अपने बच्चे को समय प्रबंधन को अच्छी तरह से अपनाने के लिए प्रेरित करें। यह मंच आपके बच्चे को आत्मनिर्भर छात्र बनने में मदद करता है, क्योंकि ई लर्निंग असीमित शिक्षा संसाधनों का भंडार है। Best ways to make the most out of e-learning. Recommendations with best practices to make the most out of e-learning. Set schedules for learning. Let it become a habit. Students can repeatedly watch the video lessons. Learning with Destination Success provides an opportunity to relearn. The e-learning provides a platform for parallel learning, which means that the child can also study another course simultaneously in tune
with his schooling. As the child gets into e-learning highway, he starts exploring and experiencing the vast variety of academic choices, which paves the path for the individual in becoming an independent learner. ई लर्निंग को बेहतरीन तरीके से अपनाने के लिए कुछ सुझाव हम आपको देना चाहते हैं। सीखने की यह जो कार्यक्रम प्रणाली निर्धारित की गई है, यह एक अच्छी आदत के रूप में अपनाएं। ना समझ आए विषय के वीडियो को बार बार देखकर समझ सकते हैं। डेस्टिनेशन सक्सेस के अंतर्गत दिए गए वीडियो, वर्कशीट, असाइनमेंट का अभ्यास कर इसका लाभ उठाएं। यह आपको आपके कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ समानांतर शिक्षा सीखने के लिए मंच प्रदान करता है। ई लर्निंग आपको एक आत्मनिर्भर विद्यार्थी बनने में मदद करता है। The beautiful concept of e-learning is acquiring a lot of skills. Building an e-learning culture has three stakeholders: the administrator, the teacher, and the learner. Over here, the administrator and the teacher team joined hands to provide the best for our learner in allowing him to grow. In fact, e-learning leads the learner, the student, to be self-directed, self-motivated, self-regulating, and helps the child, the student, to continue the lifelong learning journey in this contemporary world. हमारी ई लर्निंग प्रणाली का काम करने का लक्ष्य कुछ इस तरह है। हमारे स्कूल प्रशासन ने आईसीटी आधारित संरचना प्रदान कर सीखने का बड़ा मंच दिया है, जिसे अध्यापकों ने अपने ज्ञान व कौशल से प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाओं से सिखाने के इस तरीके को सुविधाजनक बनाकर विद्यार्थी में स्वनिर्देशित, स्वप्रेरित, नियमानुसार ठहरने का धीरज व उम्र भर सीखने की प्रक्रिया के इन सभी गुणों का विकास करने की कोशिश की है। A schedule for your child to follow is prepared and would be sent to you through the school app Track My School, which would help you to create a similar one during the Ramadan period. हमने विद्यार्थियों के लिए समय तालिका बनाई है, जो कि ट्रैक माई स्कूल द्वारा आप तक पहुंच जाएगी। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि इसका पालन करके विद्यार्थी समय प्रबंधन का गुण सीखकर समय का सदुपयोग करना सीख पाएं। E-learning is not intended to replace conventional methods of classroom learning. The aim of e-learning is to create an augmented learning environment where technology is used to deliver a combined range of teaching and learning techniques. ई लर्निंग पारंपरिक शिक्षा के ढांचे व कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा का विरोध नहीं करती, ना उसका स्थान लेना चाहती है। ई लर्निंग का उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा का विस्तार तकनीकी चीजों की मदद से पढ़ाई के अभ्यास व सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। Thank you. We look forward to hearing from you with questions and feedback. This helps us to improve our community engagement webinars. Please use the link below or scan the QR code to submit your feedback. The recording of this webinar will be available on the community engagement page
of our website. The QR code is seen on the right side down corner, and the link to complete the feedback form is below it, bit.ly/ICS-feedback. The screen would be available for the next 4 minutes for you to go on to the feedback platform. आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वेबिनार में दिए गए इस फीडबैक फॉर्म को भरकर भेजिए, ताकि हम आपकी इस फीडबैक के द्वारा अपनी वेबिनार के कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने में सहायता कर पाएं। आपको इस वेबिनार का कोड दिया गया है और यह स्क्रीन 4 मिनट के लिए आपके सामने उपलब्ध है। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर इस मंच पर उपस्थित हुए। आपके बच्चों के भविष्य की बेहतरीन कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। In respect to the webinar, we had been receiving a lot of comments and suggestions and views. We have selected a few common questions to clarify at this platform. What would we do if we face technical glitches in our computer? What if internet lag happens? The third one, if you have 2 or more children and only 1 laptop, can all of them attend classes? Dear parents, for all your queries based on e-learning and for these 3 questions, which is related to it, I would have only one answer, where we have created a platform to record all the live classes, and you can avail it at your comfort zone when the child requires. If you have any doubts, please type in the suggestion box in the link given and complete it. Our corporate media response team would reach back to you at the earliest after you submit your suggestions. इस कार्यक्रम के पहले हमारे पास काफी मात्रा में प्रश्न आए, जिनमें से यही 3 मुख्य प्रश्न दोबारा लोगों ने पूछे। जिनमें से पहला एक प्रश्न है, अगर हमारे कंप्यूटर में तकनीकी खराबी आ जाए। दूसरा प्रश्न है, क्या करें अगर अचानक हमारा इंटरनेट बंद हो जाए। और तीसरा, हमारे 2 या इससे अधिक बच्चे हैं तो ये कैसे संभव है कि एक साथ अपनी क्लास में हाजिर रहें। तो इन सभी तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि हमने हर विषय की क्लास की रिकॉर्डिंग की है। आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे किसी भी समय अपने बच्चे के साथ बैठकर उस क्लास की या उस विषय की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो कि MS स्ट्रीम्स में उपलब्ध है। धन्यवाद। Dear parents, as we have come to our time limits, we are concluding our session. Thank you, one and all, for investing in time for the session and partnering with us to build our child's future successfully. Have a great day and keep in touch with us and participate for the future webinars and community engagement programs, which will be reaching out to you soon. Thank you. उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले कार्यक्रम में भी आप भाग लेंगे। धन्यवाद। The session is adjourned.